Hello and welcome back to Amster Dragneel's channel, brothers. I am Amster Dragneel from your favorite channel on Amstermadathil. We will be talking just free things as it is over. The international break is done. We'll be going back to our league matches, and that will help us get back to bit more interesting matches because the matches that we had in the international break time were, I would say, a bit underwhelming. I am just saying. I don't know whether you will have a different perspective about it. Please let me know about your perspective so that I can also have different ideas. Yes, there are few players that played really well. I would say Yamal's debut inside Spain was absolutely great. Then Belgium's matches, and you could also say regarding the different players that did very well during, or different teams actually during the international break. You can also see that Japan was having an interesting international break where they actually defeated Germany 4-1 or 4-2, 4-1, I guess. But for this stream, I am having three topics in my mind to talk about it. One is going to be the league and the expectations. What regarding La Liga, regarding Premier League, and regarding if you have any idea about what you can say regarding other leagues, Serie A. If you have any interesting thoughts, we can discuss that. I am ready to hear about those kind of things. And then we could also talk about a bit about Euro 2024 qualifiers that just happened. If you have some thoughts, if you have some players that you would look to take into your club, if you have that, please tell those in the comments. And regarding Mr. Manchester United's dreadful season that is currently going on, for me at least. Also, it's a bit big amount of topics that I'm bringing in. I don't know whether I'll be able to completely cover all those topics, but we will be also going through Indian football because we need to give a bit amount of what you can say projection to all the people that Indian football is a big thing for us as a YouTuber, us as footballing fans, us from India itself. We want our nation to become the footballing nation that it used to be during an era, and currently what it is in this current season. So first, since until I think Dwaraka joins. Dwaraka will be joining us in our stream, and who else will be joining? We will be looking into that. Whether somebody else has any interest of joining the stream, we will be also letting them also join. So let's see whether that happens. In until then, we will talk about the current issues that are happening in Manchester United, the brothers and the sisters who are watching. Thank you for joining. First of all, who all are joining, joined my stream. It's a pleasure to be talking to you and having a good comments with you. You can share your comments if you have any. So let's go with the Manchester United one. I will share you something that I found just now about Manchester United, that after taking over of this team, the debt has reached a level of 1 billion. 1 billion.
It's the recent events. Oh my god. What more can this team has to face? What more this team needs to see in its own current life to become this bad or even worse? Is there anything even worse? Oh, I would say the biggest thing that currently that they can see even worse is relegation. Manchester United's relegation will be the biggest next talking point. Yes, Jadon Sancho's situation. Regarding Jadon's Marathi cooler, you need to join the stream. Okay, anyway, I think he's just getting ready to after his work. So, regarding Jadon Sancho, we have a new update on Jadon Sancho. I will share you that if you want to talk about that also. Regarding it is here. So, Jadon Sancho is currently announced in the 25-man squad for Premier League. And the biggest next thing is Donny van de Beek is still going to be the player. The player has not yet even played a single match in the competitive section, not in the friendlies. During the friendlies, I know he has played, but currently he has not played even 1 second of. Let's just cross check whether that man has ever played during this Premier League. We can check that. Donny van de Beek. Donny van de Beek for this season alone. Okay, see, in this season, he has played in the Borussia Dortmund match. That was wait, is this even in 2000? Okay, 6 exactly. See, he did not play after August 6th. He did not play after August 6th. Sorry, you are not able to see that cleanly. Watch this. This is the last time he played against Athletic Club de Bilbao in August. The man has not yet played any other match, and he's still being currently told that he is in the 25-man squad. Is it because we were not able to sell him off? I think so. We have not been able to sell that man off. So I think he was linked with going to somewhere as a loan. Transfer status. Uh, oh, interesting. I don't know whether this is true news. I am seeing it with Manchester Evening News, but anyway, this is a small update that you can see that Lorient and his old club Ajax have both reportedly been interested in Van de Beek, but it is Galatasaray who thought to be leading the way. Do you see any like? Is it ever going to happen that this man is going to play for the team? I don't know. Is there any idea that this man can live up to his levels in the Premier League that he showed in Ajax? It's something similar to what is Jadon Sancho happening in this game. He has to live up to his level. And Jadon Sancho also, there were numerous comments regarding Jadon Sancho coming up. His situation, and currently it is being told that he has repealed or he has taken out the comment that he made on in Twitter, if I'm not wrong.
he has taken back that post. So, what is he trying to do? He has created such a ruckus in this. Uh, he has. He is a great. It's tough to see this kind of mentality in the current Manchester United. Literally, the Manchester United that you have as the biggest clubs, one of the biggest clubs. I'm not putting it as it is because it is Manchester United. It is Manchester United. The the club has history. The club has value. It's something similar to Liverpool also. It's something similar to Barcelona, Real Madrid, and all these things. So if you have a level of that level of what you can say, that level of uh, history, and you don't show that kind of, it's pathetic. It's pathetic when it comes if you can, if you are doing this. And I am hearing in the news, or I am also seeing in the Instagram posts from noticeable people that his schedule, when he was having this issue of running up to the current level and so on and so forth, r- he is not living up to his mark. He is not at all living up to his mark. I will read out let me just find his regarding him. Let me just find what is regarding him, and I can say the beautiful words that were told regarding uh, Jaden Sancho. Oh God! But see, um, I'm not able to find it. God damn it! Where is it? See, the major factor and major issue in this situation is regarding Jaden Sancho not able to live up to his quality. Hello, Dwaraka Bhai. Welcome to the stream. We are talking about Jaden Sancho. आपने पूछा है Yes, तो definitely. Actually, बात I कर रहे also हैं. wanted to know कि what ऑडियो happened नहीं आ with रहा है. Jaren. क्या? ऑडियो नहीं आ रहा है. Why? अभी आ रहा है? नहीं. For me at least, no. अभी है? What's happening? क्या वो आवाज आ रहा है क्या? Oh, wait, maybe. Is it because of my own laptop? Oh, okay, okay, okay. आवाज आ रहा है? एक मिनट, एक मिनट. मैंने खुद का सॉरी 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 मेरा खुद का लैपटॉप का ऑडियो क्लोज करके रखा था. सॉरी. ठीक है. Let's go. Let's continue. Let's continue. Are there any comments? Okay, no. Yes, But not yes, much definitely, I want comments. you to share the screen and please open Twitter and please open some any of the Manchester United जो हमेशा like we have Barca Universal Barca वगैरह वगैरह वो तो so that kind of news हम run करेंगे and we will talk about Manchester United mostly and after that uh, we'll talk about international break and injuries. By surprisingly, there are no injuries for any Barcelona player. But yes, let's continue. Surprisingly. United, please. Yes. Yes, no, मैं आपको बोल देता हूँ since you have started you came in a bit late. हाँ. हम लोग we are planning to talk about leagues, the league and the expectations, and Manchester United, if possible, Euro 2024, and if
regarding Indian football, because we had a good talk with yesterday Fine. poetic scales regarding us at least showing the um, Support. talking about Indian football. So I Yes. have few pointers regarding Indian football where with the what you can say with the ISL, with the AFF, AIFF, and so on. I have few points, and if you can add, you can also say in between this whole scenario. I want to talk about a new update. I will share that. ये देख लो. हाँ. Fernando Santos reportedly set to leave role as a Poland coach after bad start to Europa. चलो ठीक है, वापस लाओ पुर्तगाल में, आप क्या करोगे? वही तो पॉसिबिलिटी है, मतलब बेस्ट को वर्स्ट बनाओगे और वर्स्ट को और ज्यादा वर्स्ट बनाने में लगे पड़े हैं, तो व्हाट कैन आई से मोर, आई थिंक इट्स ए, दैट काइंड ऑफ, it's बट बट आई थिंक हाँ, या, तो हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बोल रहे हैं, तो बिल्कुल. आपको इस इस कमेंट के बारे में, लाइक हम्म. रिगार्डिंग दिस सेंटेंस, हम्म. व्हाट डू यू से? बिकॉज I will tell you two things. One regarding Jadon Sancho and one regarding Donny van de Beek. हम्म. Jadon Sancho has currently disrespected Eric Ten Hag, but अरे he वो still चूतिया प्लेयर है यार, चूतिया प्लेयर है. एरिक टेन हाग जैसे कोच को कौन पंगा लेता है भाई? वो तो गधा ही होगा, दिमाग गांड में होगा उसका, जो उसके साथ ये. exactly. भाई एक बात So, बताओ, यंगस्टर्स hmm, जितने पड़े पड़े हैं ना दुनिया में, करियर के लगे पड़े हैं उनके सबके, किसी का करियर यहाँ पर स्टेबल नहीं है. किलियन yes, एम्बापे को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया है पीएसजी ने, फाइनेंशियली बड़े ऑफर्स देके. डेम्बेले तो अपनी खुद की गांड मरवाई है अपने हाथों से. कितनी सारी चीजें हो रही है, नहीं हो सकता ऐसा. सैंचो जाने दो. क्यों रोक रहे हैं? क्यों रोक रहा है बोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड का उसको? क्या जरूरत है इतना? see, क्यों रोक रहा है? दिखाओ क्यों रोक रहा है. इफ कोच डजंट वांट No, दैट प्लेयर, बोलता है शेख फोन करके, बोलता है सीईओ तुम्हारा फोन करके पेप गार्डियोला की, भाई वो उसको क्यों निकाल रहा है? नहीं चाहिए, बात खत्म, नहीं why चाहिए. do you know why खत्म. he is being currently set inside? This is the reason. ओके. दैट देयर आर मोर देन 1 बिलियन डेब्ट एज. हम्म. देखना 2005 से जब से ये ग्लेजर्स फैमिली लेके आया है, दे हैव क्रिएटेड अ डेप्ट मोर देन 1 बिलियन. भाई 1 बिलियन, इट्स नॉट 100 मिलियन और 200 मिलियन का डेप्ट नहीं है. इन लोगों ने इतना खराब किया करके रखा है, and that literally shows in what is happening now, because the players know that we can still stay in the team without any problems, because the club cannot sell us and we are not ready to leave also. अब ग्लेजर्स का तो है ही, ओनरशिप का तो इशू है ही है वहां पे. ओनरशिप की तो बात बाद में आती है, सबसे पहले तो तुम बेंचो यहाँ पे बोर्ड वाले बकचोद लोग साला सबके सब बोल रहे हो दैट यू शुड कंसिडर जेडन सैंचो. अरे वो भाई, जेडन सैंचो बड़ा है कि तुम्हारे क्लब में एरिक टेन हैग बड़ा है? कोच बोल रहा है आई डोंट वांट दैट प्लेयर, देन व्हाई द फक यू वांट टू कीप हिम इन द स्क्वाड और इन द क्लब? लेट हिम लीव, जाने दो उसको, मरवाने दो. कहाँ मरवानी है देखते हैं हम भी. सऊदी के अलावा कौन जाता है उसके लिए? औकात तो है ही नहीं. लेकिन बड़े बड़े एक कहीं ना कहीं पे तो कोई तो कुछ तो चीज है अंदर ही, क्लब के अंदर ही, जो उसको मतलब इतनी बकचोदी करने के लिए ये कर रही है. क्या जरूरत है? थोड़ा सा मेस्सी को दिखा देता हूँ मैं भी. तो तुझे क्या लगता है आंसर, ये सही हो रहा है क्या? क्या ये जो सैंचो regarding what? डिसीजन लेकर जो हो रहा है. Regarding Sancho, he is a, see, I I like the player what he was in during what you can say the Dortmund time. डॉटमंड वाला Dortmund time में इस पहले डॉटमंड वाज रियली ऑसम.
Sancho, Yes. Haaland. They're like Dortmund is like uh, a big stage where you get exposure like है ना वो हाँ. सो आई थिंक सैंचो को भेज दो वापस डॉटमंड औकात नहीं है चूतिए का भेज दो डॉटमंड बैक टू बेसिक्स ये लोग बेच भी नहीं सकता है ना. तो प्रॉब्लम वही है ना. वो दिखा रहा है. व्हाई कैन व्हाई कैन दे सेल The issue is this one. Currently, they are having, the owners are not ready to sell. First of all, second of all, who will buy him for 100 million? Who will buy him for 100 million? कितने में लेके आया था उसको? कितने में लाया था Literally, मुझे नहीं पता he was brought in for about around 100 million, if I am not wrong. हाँ, भाई साहब सच बोल रहा है Let me just see whether I am correct or not. First of all, टूट पर मत पड़ो मेरे पे. Literally, मैं गोरा हो गया लाइट लगाया तो गोरा हो गया ये he was, हाँ, देख लो, देख लो, इतना हुआ था. ऑलमोस्ट. क्या हाल है? ओके वेलकम शुभम भाई. वेलकम शुभम भाई. बोनसेस एड-ऑन्स मिला के 91 मिलियन एंड द प्योर फी वाज 73 मिलियन शुभम भाई वेलकम टू द No, no, स्ट्रीम no, भाई no. कैसे हैं आप बिल्कुल हम सब Welcome बढ़िया to the stream, brother. Welcome to दिन the भर क्या stream. दिन भर दिहाड़ी लगा के आए हैं कॉर्पोरेट मजदूर कॉर्पोरेट लेबर्स वी आर सो दिन भर जाके क्या देख रहा है दिहाड़ी लगा बोला मैनेजर ने जाके दिहाड़ी लगाई घर वापस आए खाना खाया बैठ गए हैं ज्ञान फैलने के लिए और क्या बोल सकते हैं बट बाकी सब बढ़िया है शुभम भाई आप बताओ भाई आप Exactly. बाकी सब बढ़िया है. बाकी मस्त है Wait, एकदम see, this is in pounds, 73 million pounds, and सॉरी आई it is पाउंड्स भाई वेंचर में आई वाज कंसीडरिंग इट इन यूरो नहीं, 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 ये अमाउंट नहीं था. 73 million pounds, or you can tell it in $91 million. He was that. हाँ, so almost 100 million, 90 million का. ठीक है. 100 million पे वो किसी आएगा उसको लेने के लिए? मिलियन मिलियन क्या बोल रहे हैं विश्वम भाई? ये सांचो ने पोस्ट वगैरह डिलीट कर दिया अगेंस्ट. अपने हाउसफुल 2 देखा है शुभम भाई अपने हाउसफुल 2 देखा है उसमें अक्षय कुमार वो मिथुन चक्रवर्ती के पैर पड़ता है हुजूर हुजूर करके उसके धोती से मुंह पोंछता है ना वो वाला सीन क्या होगा सांचो ने जाके हुजूर जाने दो माफ कर दो यस होना चाहिए यार यू रिप्रेजेंट दैट ब्यूटीफुल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या प्यारा क्लब है वो क्यों हो रहा है ऐसा उसके साथ बीइंग अ बारसा फैन मैं नहीं चाहता मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा करे मैं खुश हूं लिवरपूल अच्छा रिबिल्ड कर रहे हैं उनको यार एक चूतिया सा क्लब भाई एक चूतिया सा क्लब अच्छा ओनर भी लिया क्या कर रहा है यूरोप में सिटी मैनचेस्टर सिटी शिट क्लब था भाई टट्टी था टट्टी शो मी जस्ट वन फैन ऑफ मैनचेस्टर सिटी बिफोर शेख खालदुन अल मुबारक took over that club आई डोंट नो हिज नेम खालदुन अल मुबारक है कोई है मुबारकबाद जो भी है उसका नाम ओनर उसके पहले का बताओ मिडलसब्रो 8 टू मैनचेस्टर सिटी ये स्कोर देखने को मिला है ये ब्रिस्टल सिटी ब्राइटन ये शेफील्ड ये सब जो है ना ये सब उसको पेल पेल के जाते थे भाई मैनचेस्टर सिटी को एस्टन विला तुम्हारी Exactly. बीच And okay, तुम वो the next interesting talk about Sancho. हाँ He was given special start time for training.
When I was reading the thing, he was actually given 1 hour before. Like, अगर 10 बजे है टाइम, 10 बजे है ट्रेनिंग, उसको बोल देता है तू 9 बजे आ जाना। देख भाई, एक बात बोलता हूँ, एक बात बोलता हूँ, इसको इतना ज्यादा पैसा लेकर दिया है, इतना ईगो आया होगा उसको, इतना मैं भी बड़ा हूँ भेंचोद। अरे लवड़े, तू है कौन भेंचोद भोसड़ी के? तेरी औकात क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, दैट्स इट। अगर कोई पांचवा क्लब अंदर आता है तो देन इट्स एसी मिलान। छठा लाना है यस। तो अयाक्स लाऊंगा मैं। किसी दूसरे क्लब का नाम भी मत लेना, ये चेल्सी वेल्सी, ये तुम्हारा ये क्या नाम हो, इंटर मिलान तो चलो ठीक है, इंटर मिलान भी है लेजेंडरी, बट अगर छठा क्लब लाना है तो मैं अयाक्स को लाऊंगा। अदरवाइज टॉप 5 क्लब्स ऑफ जीरो, एंड देन इफ यू आर प्लेइंग फॉर वन ऑफ दैट दोस क्लब्स, भाई औकात है भाई तेरी, कुछ तो उन्होंने देखा होगा तब जाके तेरे को लिया है। चूतिए, तू है कौन? तुझे आइडेंटिटी क्या मिली है? तू खेल भी नहीं रहा, फिर भी तेरे को इतना, तेरे नाम का इतना मतलब मीडिया में चल रहा है तेरा नाम, क्यों? यूनाइटेड बहुत बड़ा क्लब है भाई, औकात है उस क्लब की, बहुत हिस्ट्री है, लिगेसी है, वहां रिप्रेजेंट करने जा रहे हो आप उस क्लब को। तो जो कोच बोल रहा है, कोच भी तो कुछ तो हाँ, औकात है ना उसकी। ओके। नो, श्रेयस, तो नॉट। ऑल्सो मे बी भाई, मे फार्मर बी। लीग वाले क्लब लेके क्या करोगे? जर्मनी बंडस लीगा, फ्रेंच लीग, फार्मर्स लीग के क्लब लेके क्या करोगे? क्या करोगे? प्रिजन एफसी फॉर नहीं। अब issues- देखो, मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर से एक चीज मैं ना आपको हाईलाइट कराता हूँ। शुभम भाई, आपके हमारे श्री भाई इफ यू आर फ्री यू कैन जॉइन अस। तो मैं इफ आपको एक हाँ, एक हाँ, मैं आपको बात नोटिस कराता हूँ कि ऑन द पिच मॉनिटर करते हो, ठीक है, ये बात हर क्लब में होती है। ऑफ द पिच आप प्लेयर्स को कितना मॉनिटर करते हैं? आपका क्लब इतना बड़ा है तो उस क्लब के नाम के ऊपर धब्बा ना लगे, कोई घटिया सी हरकत करके वो प्लेयर अगर कुछ हरकत करता है तो उसके बाद मुझे लगता है अगर वो क्लब कुछ करता है, वो प्लेयर ऑफ द पिच अगर कुछ एक्टिविटी है उसकी, देन इट विल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंपैक्ट योर क्लब्स इमेज ग्लोबली। ये आपको होना चाहिए, समझना चाहिए, बिकॉज कोई भी एक्स मैड्रिड प्लेयर को बार्सिलोना नहीं खरीदते। देयर इज अ रूल, देयर इज अ रूल, तुझे पता होगा। इसको इसको हर्नांडेस, डी मारिया, एंजल डी मारिया, ये सब जुड़े हुए थे बार्सिलोना से। बट कितने सारे प्लेयर्स बार्सिलोना की जो तरफ से खेले हुए वो उन्होंने लिए हैं, ताकि फुसा को इज द लेटेस्ट एग्जांपल, इकर ब्रावो, लेटेस्ट एग्जांपल्स, रोनाल्डो रोजारियो, लुइस फिगो, बहुत सारी चीजें हैं, वो तो छोड़ दो। बट ये ऐसा नहीं करते। अब क्या करती है बार्सिलोना? बार्सिलोना क्या करती है कि आपकी ऑफ द पिच जो मूवमेंट है, आपकी सॉरी मूवमेंट यानी कि ऑफ द पिच जो आपकी लाइफ है उसको भी मॉनिटर करते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आप क्लब कितना जा रहे हो, अगर आप बैचलर हो तो आपकी एक्टिविटीज क्या है ना, वो चीजें देखते हैं। आप सोशल मीडिया पे आप कितना एक्टिव रह रहे हो वो मॉनिटर किया जाता है। ये चीजें हैं, क्योंकि वो नेचुरली पैशन नहीं आता पुयोल जैसा, विक्टर वाल्डेस जैसा, मेसी जैसा, पीके जैसा, फैब्रिगास जैसा, अल्बा जैसा, जो गावी में अभी फिलहाल आ रहा है, वो है ना, वो तो नहीं आ रहा। सीन ये है। तो ये भी चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सा गौर करना जरूरी होता है, ध्यान देना जरूरी होता है, जहां से आपके प्लेयर्स, देखो आप ऑफ द पिच में अगर उनके ऊपर ध्यान दोगे, चलो ठीक है, उनको लगा कि भाई भाई मेरे ऊपर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं क्लब, बट एट लास्ट आपको एक अच्छा अच्छे कैरेक्टर वाला बंदा भी मिलेगा, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर सिर्फ पिच पे नहीं होता। सर योहान क्राइफ ने बोल के गया कि आपको ऑफ द पिच भी जो चीजें हैं, एक इन पर्सन आप कैसे हो, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप आप देखो, आप कितने जेनरस हो, आप कितना हेल्पिंग हो, ताकि आप ऑन द पिच भी वो दिख जाएगा कि आप अपने टीममेट्स को कितना है कर रहे हो। रिजल्टिंग नतीजा दिख रहा है सामने। ब्रूनो फर्नांडिस, द इगोइस्टिक शिट, कैप्टनिंग द लेजेंडरी क्लब लाइक यूनाइटेड। मैं उसकी क्वालिटीज, प्लेयर की क्वालिटीज को मैं नहीं कम नहीं गिना रहा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट एज अ पर्सन और एज अ कैरेक्टर ईगो वगैरह देखिए, चूतिया प्लेयर, एक नंबर का घटिया, बेकार।
मैं उससे उससे ज्यादा तो मैं फिर ओनाना को दे दूंगा कैप्टन का आर्म बैंड। उससे ज्यादा जो और क्लब में है दूसरे बंदे उनको दे दूंगा। वरान को दे दूंगा, कैसेमिरो को दे दूंगा। चलो ठीक है, नए बंदे हैं, दूसरे प्लेयर को दे दो यार, एरिक्सन को दे दो। नहीं है, ये नहीं है। और मुझे लगता है कि नॉट 100%, बट एटलीस्ट 5 to 10 or more than 10 to 15, अंडर 20%, बट 10 to 15% एरिक टेनहाग फेल हो रहा है कि ही इज नॉट able to handle that egos of the players, because कहीं ना कहीं तो बोर्ड भी इंटरफेयर कर रहा है। बोर्ड इज सेइंग कि नहीं नहीं नहीं, अब हमको ये प्लेयर रखना है, नहीं नहीं हमको ये प्लेयर रखना है। अरे भोसड़ी वालों, अगर तुमको कुछ तो करना है लाइफ में तो फ्रीडम दे दो उसको। एक्सपीरियंस है ना उसको, दे दो ना फ्रीडम उसको। नया बंदा थोड़ी है, उखाड़ के आया हुआ है। पेप गार्डियोला के अंडर असिस्टेंट था अयाक्स, यू नो अयाक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे अंडर उसके, एरिक टेन हाग के अंडर, यू नो। बहुत सारी चीजें हैं सर यार। तो यही बोलना चाहता हूं मैं, दूसरा कुछ नहीं। आप बताओ, आपके हिसाब से क्या लगता है? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रहा है, सॉरी। सी, चेक आउट हिज स्टैट्स। इसका स्टैट्स भी देख ले। फॉर एवरेज 6 पे चल रहा है। एवरेज 6.3 पे चल रहा है। I know he's only played for 30 to एक 24 to मिनट, 21 minutes. आंसर जस्ट गिव But मी। मैं आया, 1 मिनट देर बस। हाँ, okay. See, I have nothing against Sancho. I have nothing against Sancho. But if you don't play for the club will not be bending down to you. That is a fact, and that you need to remember. And I also need to tell the club that you should not bend. I know what Eric Ten Hag does. He will show one talk about his this thing in the media to be have a calm face, and then he will talk behind the scenes that तुझे अगर मैं अच्छा like if you don't want me to talk bad about you, start doing better, start giving better. So that is the literal thing he was given. He was actually asked for working at earlier times and start giving more training sessions to build his confidence, to build his what you can say. He said we all know that he went through depression and so on. Fine, डिप्रेशन में हर कोई जाता है, ट्रू, हम भी जाता है, and we are given the confidence boost. I have also gone through. When COVID hit, I lost my scholarship. चला गया ना, बट फिर भी मैं यहाँ पे टिका हूँ. I am trying to do something new. I am trying to better myself. I am trying to get into new things. So confidence तुम लोग भी दे रहा है मुझे by viewing my channel, giving me support. That gives me more confidence to work on my own streaming, whatever things. So they were giving him the support through Manchester United. But if you go in front of the whole world and start ranting about the people who literally told that to get back your confidence. If you go around saying, please don't believe everything you read, I will not allow people to say things that are completely untrue. I have conducted myself in training very well this week. अबे इस वीक किया होगा तूने, पिछले वीक में, बट ओके फाइन, वीक में है, फील्ड पे तू ट्रांसलेट कर रहा है, जितवा रहा है. If you are going, then why did we lose to Tottenham? Huh? Why did we lose to Tottenham?
You did play for 24 minutes, right? You could have been the game changer in our team, right? Why didn't you play? That you were the great, doing your side well. Why? Why didn't you? So, and literally saying these kind of words also. Wait a second. Sorry. Literally saying, I believe that there are other reasons for this matter. I won't go into. I have been an scapegoat for a long time, which is unfair. True, you should not become the scapegoat. क्यों तू scapegoat बन रहा है? Because of what? Because of this only, right? Ratings देख तेरा. Ratings यहाँ पे देख. You were better. You were getting better. अभी कहाँ पे है? What is your current stats? Not good. And I don't know how your game is translating in the England squad. इंग्लैंड स्क्वाड में आपका कैसा चल रहा है मैं मुझे मालूम नहीं. ओपन हैंड एंड सेम इंग्लैंड स्क्वाड में आपका क्या हुआ मुझे मालूम नहीं. आई डिड नॉट वॉच यू. आई डोंट. I do mind watching you. I do give you respect. I want to see you. Hello Naman, welcome to the stream brother. Thank you. हाँ हम लोग मैन यूनाइटेड एंड जेडन सैंचो के ऊपर रैंट कर रहे हैं. सो I heard, लिटरली I saw his video. He was off to यार party somewhere in New York. आपका क्या राय है? I don't know, but I've been hearing, I don't know if it's rumors, he recently deleted his comments about what exactly भाई happened. आपका वॉल्यूम थोड़ा कम है हाँ माइक का. थोड़ा कम बोल हाँ मैं ये बोल रहा ओके हूँ कि I heard that he deleted all the comments that he had in his say यस. when Eric Ten had dropped him regardless. And then I saw a video of him partying in NYC. Not sure कि वो अभी recently का है कि it's way back, but some people reported that it was after Eric Ten had decided to drop him out of. वेरी नाइस. This is the ones that I know. But Sancho ka downfall, if it's happening, it's very concerning because this guy has the potential to be possibly like the best. Like 3 years juniors is say you have a guy like Jude Bellingham who's 20. He is doing much better than him as of now, Absolutely. which is very sad because Sancho was one of my favorite players in football. And See. Sagar, if Hmm. see party karna hai, that's fine. To but at a time when you are like you are under scrutiny by the club, by a coach, by your fans, and you decide to go off in NYC and party, ठीक है तेरे को स्क्वाड में लिया ठीक है चलता है but it's time for you to work on the thing that manager seems कि भाई ये नहीं होना चाहिए था. That's my opinion. Correct dialogues, brother. Correct dialogues. Same dialogues. I have I have same opinion regarding your thoughts that he is currently under scrutiny. उसको तुझे ये भी देखा है ना उसके बारे में ये भी सुना होगा कि अ, उसका स्पेशल ट्रेनिंग चल रहा है. स्पेशल स्टार्टिंग टाइम. Yeah. Hmm. ये भी मैंने सुना ही इज था. गिवन Eric Ten Hag at 1 hour first time. अर्ली. Hmm. That He is I given heard. 1 hour. Yeah, yeah. So he is given that much amount of trust, and he is given that much amount of push by the team. And you go around stating the fact that oh my god, these they are keeping me as an scapegoat. You are not going to do all these things. क्या है? That is Hey, not. you have to remember also when Ten Hag first came. Ten Hag, the first big game at home against it was against Liverpool at home.
सैंचो वही था जिसने गोल मारा था, और द गोल ही स्कोर्ड आई थॉट कि ओके भाई अब ओले के अंदर था, एरिक टेन हैग उसका बेस्ट निकालेगा, बट समवेयर देयर माइट हैव बीन सम फॉलिंग आउट जो अपेरेंट है कि ऐसा हुआ है। अब वो क्या हुआ है, इफ इज नॉट रेडी टू रिपेयर इट, यू आर गोइंग टू बेसिकली एनवाईसी पार्टी कर रहा है तू वहाँ पे, if you're not, it means you're not ready to repair the relation. Yes. And so, see, like you said, if you go and check out his previous match ratings before this league started, it was very high. It was pretty good according to me at least. फुलहम के against 8 था, उसका एक assist भी था, goal भी था, and then assist in Chelsea's match. All these things looks really interesting, and they it was showing real progress in his life after being in that depressed phase. He was told that in the first start of this year he was in a depressed phase. Abhi, and we saw him slowly building on that. After that, he just went down the drain. His complete, his complete scenario went down the drain. See, Nottingham K against 5.9. He played for 30 minutes. You need to remember, he played for 30 minutes and then he's having 5.9. I think it's very highlight करना चाहिए कि you can blame the club atmosphere sometimes, but when you have a guy like Rashford who's working hard, when you have a guy like Bruno who's working hard, when you have guys like Sandro, Andre Onana, if these guys are steering the ship in the same direction, and there's this one guy who wants to go in a different trajectory, like Jadon Sancho, he when party karunga and all, जो भी है, that really impacts the club, which is very bad in my eyes. It's very disheartening to see a great talent go and go destroy themselves. So that is one regarding that. And Naman, since you have joined now, I want to also know about your thoughts on Donny van de Beek, who has not yet played, who has only played till 6th of August for Manchester United. He is still Disheartening. in the 25 man club. Sorry, 25 man squad for Premier League. Hmm. क्या राय है आपका? And I also want to know a bit more from Dwarka bhai. Okay, so About Donny van de Beek. Donny van de Beek. उसका तो सीन ही नहीं पता चल रहा भाई, इतने अच्छे प्लेयर को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लोग। See, जब मैं डॉनी वैन डे पिक को देखता हूँ, आई रिमेंबर हिज जो दो सीजन जो जितना मेरे को विविड मेमोरी में याद है, द 18-19 सीजन ही वाज फिनोमिनल। बंदा एज अ सेकंड स्ट्राइकर वाज वर्किंग वेरी गुड। ही इवन प्लेड एज अ कैम समटाइम्स कि वो ड्रॉप बैक करे ताकि मिडफील्ड स्ट्रांग रहे, एंड देन यू हैड हिम एज अ सेकंड स्ट्राइकर वर्किंग फाइन, scoring against Juventus, scoring against Tottenham, and he was doing good even in the, I'd say, the Eredivisie, which is the Dutch top flight division. Next season 1920 में he was doing good, and expectedly he was कि भाई हाँ वो छोड़ने वाला है। At one point I thought कि वो बारसा end up करेगा, but since अपनी financial situation इतनी गंदी हो चुकी है इस point से, तो it didn't make sense for us to go after him, so Manchester United गया। But I had my reservations over this move because Man United had signed a striker in the form of Edinson Cavani, almost same, but Cavani plays more of a natural striker, so I was a bit skeptical. And जिस तरह से वो बंदा खेला नहीं है ना, it's so sad to see कि like that man would have been better, much happy in rather any other club, like maybe Arsenal or Chelsea, or maybe even I'd say to some extent some other club. So बहुत disheartening लगता है when a guy like that great prospective ruined हो जाता है, क्योंकि इसमें आपने उसको ज़्यादा गेम्स नहीं दिए। हाउ मेनी स्टार्ट्स ही हैड इन यूनाइटेड? बेयरली आई थिंक। फुल 90 मिनट्स तो बहुत कम मिला उसको।
एंड जब एरिक टेन हैग वाज अनाउंस्ड कि भाई 2022 में आएगा, होप थी उसको कि यहाँ पे मेरे को अब स्टार्टिंग मिलेगा, बट अभी भी नहीं मिल रही है। तो और सैड लगता है कि व्हेन योर मैनेजर, द वन हु बेसिकली गेव विंग्स टू योर करियर, वो आपको स्टार्ट नहीं दे रहा। मतलब या तो प्लेयर में गड़बड़ी है, बट प्लेयर में गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी ये है कि आप उसको स्टार्ट ही नहीं दे रहे हो कि द स्टार्ट द मिनट्स दैट ही डिजर्व फॉर हिम टू बी देयर। ये मेरी स्ट्रेट अप ओपिनियन In say you can see the stats in the 2022-2023 season. He only featured started for 7 matches. है। So, He played 164 games only. 160 Sorry, 164 minutes it's fine and मतलब 12 matches. so if you see 12 matches, अगर आप 7 matches start कर रहे हो, I'm pretty sure he would have been subbed out at some time because 164 Yes. minutes आपके प्रॉपर, आपका सिर्फ एक मैच प्रॉपर स्टार्ट बनता है। 90 मिनट का एक गेम होता है। यू सी द See, subbed on 5 times, subbed off 2 times, तो क्या ही expected मतलब। goal chances created in all these 7 times. Chances created is three. Bhai sahab. So just imagine, like, you are not even like Reese Nelson who's getting some decent minutes. Like Arteta उसको throw दे देता है कि भाई तू जा। He You played see more this minutes. He played more minutes during the previous year when Solskjaer was there. exact, that's what is more disheartening कि like ठीक है सोल्जर उतना नहीं कर पाया, but when you have a guy like Eric Ten Hag who's not giving you minutes, it's concerning. Like for example, when Zidane came back to Madrid in 2018 or 19 में बंदा वापस आया, इसको गॉट एक्साइटेड कि हाँ भाई मेरे को अब मिनट्स मिलेगा, मैं खेलूंगा। नहीं मिला उसको, ही गॉट डिसऑर्डर्ड। बंदा सेविया चला गया कुछ सीजन बाद, वहाँ पे सोचा एंचेलोटी के अंदर उसको स्टार्ट्स नहीं मिला। नाउ इज बॉलिंग एट बेटिस। सो अगर इफ डॉनी वैन डर बीक वांट्स कि भाई मेरे को करियर जल्दी खत्म नहीं करना है, आई वुड से टू हिम गो फॉर एनी क्लब। प्रीमियर लीग में नहीं रहना ठीक है, बट गो फॉर अ क्लब जहाँ पे तुझे मिनट्स दें। And in this case, I'm very much happy to say that German Spanish clubs, and even to some extent, I'd say some good French clubs can offer you decent minutes and some starts as well. Like you see with Isco, is currently bowling at Betis, not at his fluent best, but still ball कर रहा है वो। That's what you need. जब आप start करते हो तो आपका momentum बढ़ता है। You exactly know how it feels to be on the pitch again. So वही होना चाहिए। And he was linked with going to Galatasaray as a loan move or a payment move. If I don't know correctly. Hello Subjit, welcome to the stream. हमारा फैब्रिचो आ गया हमारा, but रिगार्डिंग का इतना and see, this is very disheartening to see, and I also want to highlight a fact to Naman Bhai regarding a different topic. The डॉनी वैन डे बेक का चलता रहेगा, सांचो का भी चलता रहेगा, पर ये कब खत्म होएगा? साला ये कब खत्म हो गया होएगा? देखो, Like when will this end? I think you know what the solution is. If you are a guy like, अगर तुमने किसमें किया है, you are a science student or a commerce student? Science. Science. So कॉमर्स में एक होता है कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेप्ट। जब आपका डेप्ट इतना बड़ा होता है, एनी डेप्ट डिपेंड्स अपॉन पर्सन या जो भी है, सो यू बेसिकली रीस्ट्रक्चर योर डेप्ट। एंड 1 बिलियन डेप्ट बेसिकली मीन्स कि भाई आपने इतना उधारी लिया है कि अब आपके पास पैसे नहीं बच रहे कि आप लोन इंटरेस्ट दे पाओ। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन एज ऑफ नाउ। एंड कुछ वीक पहले देयर वाज न्यूज़ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो शेयर्स है
which are listed on the New York Stock Exchange. Massive sell-off happened. So like the price was around $40 per share. It dropped to 20. $4 per share by the time the 20 है ना? sell-off. Yeah. हाँ अच्छा. Yes. Oh, Now it's I heard dropping to 20. I thought it was 20, but I ah, did not know that it reduced to that much low. it will I like see वो होता है but as of now the only advice to United is कि भाई आप प्लेयर्स अगर आप करियर नहीं दे पा रहे स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैव अ टॉक विद द मैनेजर टेल हिम नो मैटर हाउ बैड द शिट द सिचुएशन इज कि भाई हमें प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे सो दैट कि हम कमाएं बिकॉज दैट्स वन वे टू गेट आउट ऑफ डेप्ट वो भी बहुत बड़ी है एंड आपको फिर जब आपके जब आपकी इतनी बड़ी डेप्ट है आप स्टेडियम रेनोवेट करना चाहिए बिकॉज आई फील लाइक ओल्ड ट्रैफर्ड उतना रेनोवेशन लाइक यू सेड वंस कि रेनोवेशन ड्यू था two फॉर decade. 2 decade जब से ये like लोग लिया है, जब से ये लोग 20 साल के पहले लिया है, hmm, तब से अभी तक कोई रेनोवेशन नहीं हुआ है. exactly like 20 years is a long time like Camp Nou was supposed to start renovating in 2015 it stopped now it's happening about like, what 6 7 7 8 years Six, late 6 7 years, okay. 20 हाँ वो years. ठीक है Hmm. 20 years मतलब इधर आपका क्लब मैनेजमेंट बहुत गांडू है कि उसने कभी ध्यान नहीं दिया या तो उसको पता है वो इग्नोर कर रहा है ये सब चीजें आई विल गो फॉर द See, सेकंड ऑप्शन it is the बिकॉज second option. There is no other option there. ऐसा वेरा वेरा कुछ भी नहीं है. So yes, regarding Sancho, but one more thing is that Sancho, Van de Beek, all need to be sold off. One, they need to say yes to the sell. The player needs to say yes, I want to go. I will go. I think Van de Beek did say yes, but the sale did not happen. And there was a sale for Maguire and for Scott McTominay. Both did not happen because the player itself said, "मैं नहीं जाने वाला." So if that is when that is the case, it is hard for us to take. इसके बीच में हम लोग दो तीन कमेंट्स भी लेते हैं. सुरजीत का हमारा दो तीन कमेंट्स लेते हैं. Xavi is attracted to गे the idea. Okay. इट्स गे छावी भाई क्या हो रहा है आपको Okay. एलेक्स बायना इज अ गुड प्लेयर विलारियल का अच्छा है बट अगर उससे बेटर ऑप्शन मैं माइक पेरिनो Good player, अच्छा very प्लेयर good है player. अच्छा खेलता है लास्ट सीजन भी उसका अच्छा था Yes. And मेरा ज़्यादा I wouldn't talk too much about this player because I don't know personally about him. नहीं So वो I तो would है say, हाँ. फाइन So this is the another Kimmich, my role model. यू नो Xavi इस another. सिचुएशन में मैं कमेंट इसलिए करना चाहूंगा जोशुआ हाँ. किमिच एंड थॉमस टुकल हैव हैड दिस सॉर्ट ऑफ फॉलिंग अपार्ट लाइक दे आर नॉट Yes. सीइंग आई टू आई एंड currently Bayern में जो चल रहा है like this is possibly one of the worst Bayern management I have ever seen आपने जैसे हैरी केन के लिए 120 मिलियन ऑलमोस्ट खर्च किए इतना बायन कभी खर्चा नहीं करती थी जिंदगी में आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन बायन इतना खर्चा करे एंड प्लस अपने प्लेयर्स साडियो माने बेसिकली आपका 5 to 10 मिलियन में चला गया अल नसर एंड देन आप केन को ला रहे हो वो ठीक है बट प्राइस टैग इज द बेसिक इशू कि भाई अगर ये हो रहा है तो अगर if you see Joshua Kimmich, if he wants to come to Barca, he's always welcome. But Bayern bosses are very rigid. Unless and until he does a Lewandowski, जो धरना पे जाके बैठे पुशअप्स करे कि भाई मैं नहीं जाऊंगा मैं मैं जाऊंगा अब तो बारसा ही जाऊंगा बट मैं यहाँ नहीं रहूंगा एंड वॉट एवर ही वांट्स टू वो हो सकता है बट एज ऑफ नाउ आई स्टिल थिंक किमिच अगले सीजन तो नहीं आएगा बारसा बिकॉज बायन कम से कम नहीं तो 70-80 तो डिमांड करनी ही एंड यू डोंट वांट टू गेट अगेन इन ओवर पेइंग फॉर प्लेयर लाइक कोई भी प्लेयर हो Yes. आप ओवर पे नहीं करना चाहते हो लाइक
I could say कि for example sometimes जैसे people would say कि बेलिंगम के लिए they overpaid, but I wouldn't say कि they overpaid. Perfect price जो उधर मांगा किया, and they got their man. ठीक है, and he deserves it जो भी. So let's see Yes. किमिच का क्या होता है. एंड द्वारका भाई, आपका रिगार्डिंग जोशुआ किमिच? अभी मिच की अगर मैं बात करूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लूंगा मैं, बट शॉर्ट में बता देता हूँ। यस। मिच के बारसा आने के चांसेस नमन भाई की तरह ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत कम चांसेस है। एंड यू नो कितना रंडी रोना किया था लेवांडोस्की के वक्त बायर्न म्यूनिख, क्योंकि वो हंसी फ्लिक की बार्सिलोना में आ जाता, उसको वो पैट्रियटिज्म ये वो लड़ा लसन करके उसको अ, Hmm. एक तरीके से उन्होंने क्या बोलते हैं, सेंटिमेंटल चीजों के ऊपर ज्यादा गन भर पॉइंट दिया। पे ही हॉस्टेज रख लिया. काइंड ऑफ वो चीज है। चलो ठीक है, लेवांडोस्की तो जर्मन नहीं है, जैसे तैसे निकल के आया, बट देखते हैं, बट नॉट पॉसिबल, नेक्स्ट सीजन तो नॉट That's also my पॉसिबल। possible. बट फिर भी मैं इसके बारे में अच्छी निकला है, अभी फिनिश के बाद तो मैं इसके बारे में देखूंगा, सोचूंगा इतना पॉसिबिलिटी। Yes. ये तो है. And there was a small incident with the last game of Germany. ये वाला, it हाँ, was shown that he walked off in that kind of a manner. So, but we are hearing news that he is not injured. he is not injured because Yes. last when मैच देख रहा था बहुत सो लॉन्ग पे थ्रो से, मेरे को भी लगा कि लो होगा, बट आई थिंक ही इज फाइन एंड वी वुड सी हिम स्टार्ट, बट आई वुडंट से कि भाई उसको अभी एकदम से स्टार्ट करो, थोड़ा सा लेड ऑफ हो जाने दो, बिकॉज they're coming back on a Friday, then you expect them to train on this day, and then you expect them to start on Sunday. You don't want to overwork your players. कोई भी प्लेयर हो यार, सेम goes for any club, चाहे वो बारसा हो चाहे वो मैड्रिड हो. यू डोंट वांट कि भाई जो प्लेयर्स अभी से एकदम थक के आ रहे हैं, ठीक है फैटिक नहीं होता है, यू आर गेटिंग पेड लॉट ऑफ मनी कि हाँ भाई तू इधर भी खेल उधर भी खेल, बट समटाइम्स व्हेन थोड़ा सा मैं हमेशा इंटरनेशनल ब्रेक के क्रिटिसिज्म में रहता हूँ कि they give a very small window for the players to recover. Like if you are familiar, COVID, जब people started to resume football, they started for financial reasons. अब now you played Champions League and all. अब Champions League जैसे खत्म हुआ, हार्डली अ वीक आफ्टर आपका प्रीमियर लीग का सीजन एंड बाकी क्लब्स का लीग चालू हुआ. उससे क्या हुआ है, आपके प्लेयर्स इंजर्ड बहुत जल्दी हो रहे हैं, एंड जब when you have a depleted squad depth like Barca, even for that case मैं कभी कभी Madrid को भी लेता हूँ, because I know कि Madrid है complete, but in certain areas Madrid is not as complete. Once your main player gets injured, it's very difficult to replace him. Like for example, अगर आज को लेवेंडोस्की को इंजरी हो गई, आप उधर फेरान टोरेस को डाल दोगे, बट योर लेफ्ट विंग इज एम्प्टी. आप जॉ फेलिक्स को वहाँ नहीं खिला सकते बिकॉज जॉ फेलिक्स इज नॉट अ नेचुरल लेफ्ट विंग. आपको पूरा फॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा, आपको पूरी स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी. बेसिकली जो भी माना जाएगा सिस्टम, इधर ही प्लेज अ 4-2-3-1 और 4-3-1-2, जो भी माना सिस्टम, नाउ ही हैज टू चेंज द बेसिकली द होल आउट ऑफ इट. मैं हमेशा इंटरनेशनल ब्रेक के ये क्रिटिसिज्म में रहता हूँ, ऑल्दो इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड योर कमिटमेंट टू योर कंट्री, बट समटाइम्स थोड़ा इंटरनेशनल ब्रेक में टाइमिंग देखना चाहिए कि लाइक हार्डली लीग शुरू हुआ, 4-5 गेम्स हुए एंड आप इंटरनेशनल ब्रेक करवाते हो, लॉजिक नहीं समझता है मेरे को तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. द्वारका भाई, कुछ ऐड करना है आपको? नहीं, इसके बारे में तो कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सारी चीजें तो बोल चुके हैं नमन भाई। ठीक है. ओके. एंड नमन भाई से मुझे एक it's just an opinion, or you can say just a thought regarding this. Santos Well, is reportedly leaving the Poland coach.
हाँ ओके, मैं एक और चीज थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यहाँ पे। अभी हाँ, बायना की अगर बात होती है, एलेक्स बायना की, तो अभी एक चीज मेरे को क्लिक हुई थी, मैं अचानक भूल गया। भाई नमन भाई, बीइंग अ बारसा फैन, आपको नहीं लगता कि हमको एक अटैकिंग मिडफील्डर वाला प्रोफाइल हमको चाहिए? चाहिए क्योंकि बिकॉज यू हैव पेड्रे कॉन्स्टेंटली बीइंग इंजर्ड, तो ऑब्वियसली चाहिए आपको। नहीं नहीं, पेड्री गुंडोगन की बात छोड़ दो, हम्म। आप उनको प्योरली यूज कर सकते हो वहां पर, बट एक ऐसा, मतलब वो खुला सांड छोड़ना, लाइक ये तो अपनी ड्यूटी से बाउंड है ना। गुंडोगन हो गया, पेड्री हो गया, ये खुले सांड नहीं है। इस तरीके से हम्म। सर्जी रॉबर्ट तो खुला सांड था तुम्हारा, हम्म। पूरे पिच में भी कहीं भी रोम करता था। बट हम्म। your midfield, there used to be always a player like Arturo Vidal. You had Cesc Fabregas, you had Paulino, you had आपका कौन था उसके बाद, राकिटिश, काइंड ऑफ, मतलब वो फिजिकली भी बेटर था, टेक्निकली भी बेटर था, असिस्ट भी दे रहा है, नहीं हो रहा है, बॉल रिबाउंड हो रहा है तो बम करके बूम भी दे रहा है पीछे से। वो काइंड ऑफ प्लेयर, वो था, वो कोई तो चाहिए था अपने को एक, हाँ हमेशा। चाहिए, बिकॉज आई टेल यू समथिंग। हाँ मैं हमेशा एक गेम पे जाता हूँ। हाँ। अगर बारसा के पास एक फ्री अटैकिंग रूम मिडफील्डर होता, वो बंदा हम्म, पिच पे कहीं भी घूम रहा हो, स्टार्टिंग में स्टेगन के साथ घूम रहा हो, टू बीइंग विद लेवेंडोव्स्की, जब आपके पास वो प्लेयर रहता है ना, जो बेसिकली कहीं भी घूम रहा है एंड वो अनप्रेडिक्टेबल हो कि भाई वो यहाँ रहेगा कि वहाँ रहेगा, ऑपोजिशन मार्क नहीं कर पाएगी जब तक आपको पता चलेगा कि भाई ये तो मिडफील्डर था, बट ये तो आगे स्ट्राइकिंग खेल रहा है, ये तो हाँ। कैमोफ्लेज हो गया। वो बहुत देर हो जाती है और मार्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टू हाँ। सम एक्सटेंट मेस्सी ने भी वो रोल बहुत सालों तक निभाया है। और इससे भी मैं नहीं, मेस्सी ने तो किया ही किया, बट एक प्लेयर को मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूंगा, जो कि हमने कल की स्ट्रीम में भी थोड़ा सा उसके ऊपर हाईलाइट किया। बट एक प्लेयर था, डिफेंस से लेके पूरा ऑपोजिशन के बॉक्स में, ये बॉक्स से लेके पूरा ऑपोजिशन के बॉक्स में बॉल प्रोग्रेस करता था, चाहे खुद हो, मतलब उतनी तो उसकी औकात नहीं थी कि वो पूरा ड्रिबल करके लेकर जाए पूरी टीम को, बट पासेस खेलते खेलते हुए वो बंदा आपको वहां पर भी दिखेगा। मिडफील्डर्स को हेल्प कर रहा है, डिफेंस को हेल्प कर रहा है, अटैक में हेल्प कर रहा है, अटैक मिड में है, विंगर्स के साथ खेल रहा है। तो वो था सर्जी रॉबर्टो। हम्म। फ्री रोल, फ्री रोल, हाँ, फ्री रोल। वो तो था आपने बट ऐसे खेला, हाँ आपने ऐसे कहा कि जो खेलने वाला बंदा है वो आपको ऐसा, आपको अपोजिशन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने में या फिर मैन मार्किंग में उनका दिमाग का मतलब भसड़ हो जाए, दूसरा कुछ नहीं। वो चीज आपने जो बताई वो एग्जैक्टली सेम चीज सर्जी रॉबर्टो ने किया था। और आर्तुरो विडाल के प्रेजेंस में मुझे उस लगता था कुछ एक परसेंटेज तक वो खेलता था उस वाला, वो वाले रोल में, बट नॉट प्योरली एज सर्जी रॉबर्टो। तो ऐसा कोई एक जन चाहिए जो यस। को मतलब वो फिजिकल प्रेजेंस भी हो, टेक्निकलिटी भी वो उसमें, और आपका मतलब देखो अभी पेट्री और गुंडोगन थोड़ा सा और ज्यादा फ्री होकर खेल सकते हैं ना। वैसे भी 3-4-3 सिस्टम में हम खेल रहे हैं, 3-5-2 या फिर 3-4-2-1 बोल लो, कुछ भी बोल लो। वो सिस्टम में अगर 4 मिडफील्डर अगर आप सिस्टम खिला रहे हो, 3-4-2-1 है, 3-4-3 है, 3-4-1-2 है, उसमें अगर 4 मिडफील्डर सिस्टम है तो फिर एक बंदा तो वैसा होना ही चाहिए, एक बंदा एटलीस्ट एक, क्योंकि आप फर्मिन लोपेस के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं करोगे, कसाडो के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। हमारे पास जितने मिडफील्डर दूसरे थे उनको हमने लोन कर दिया फिर बेच दिया, ये सीन है। तो बाजार के लिए जा सकते हैं, बट हाँ वो तो देखो, क्लैश वही होता है व्हेन यू हैव सेम प्लेयर्स विद द सेम प्रोफाइल, ये बहुत क्लैश होता है एंड ये either it can create the best competition कि भाई यू आर बेटर और आई एम बेटर, और एल्स आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है कि वी नीड टू मेक देम दीज टू गाइस प्ले, which reverts you back to the 4-2-3-1 formation। मेरे को टू बी ऑनेस्ट ना, जब भी मैं करंट पासेस को देखता हूँ, आई सी देम कि ये 4-2-3-1 भी खेल सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग चलाएं तो। रीजन इज, कभी कभी व्हेन यू हैव गाय लाइक पेड्री, जिस तरह से वो ड्रिबल करता है, यू हैव सीन हिम कि वो बंदा मूव स्टार्ट कर सकता है, ही कैन इवन फिनिश। व्हेन यू हैव अ गाय लाइक पेड्री, अगर उसको आप एक कैंप वाली पोजीशन पे खिलाओ, दैट गाय कैन रेक हैवक, उसमें वो पोटेंशियल है। या आप 4-3-1-2 खिलाओ, आप दो स्ट्राइकर्स को एकदम खुले सांड की तरह छोड़ दो,
कि जाओ डिस्ट्रक्शन करो एंड तुम सिर्फ स्ट्राइकिंग करो एंड उनके पीछे पेड्री जैसे बंदे को लगा दो, carnage हो सकता है if you are ready for innovation, if you are ready to adapt, because it's time कि आपका गेम प्ले इन चैंपियंस लीग भी डिफरेंट, आपका गेम प्ले इन ला लीगा भी डिफरेंट। आप इमेजिन करो बायर्न ऑसबर्ग के साथ वैसे खेलेगी जैसे वो यूनाइटेड के साथ खेलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। The game plan for Augsburg would be different. The game plan for United would be different. तो आई थिंक आपको गेम्स को भी डिफरेंटली अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज लीग गेम है ठीक है, बट व्हेन यू आर प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम एंड कोई भी अपोजिशन आपको सरप्राइज दे सकती ये ये सेंटेंस अभी बस 5 सेकंड पहले जो आपने बोला, हर गेम डिफरेंट होगा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये बहुत बहुत अंडररेटेड स्टेटमेंट है नमन भाई, जो आपके मुंह से आया। इतना खतरनाक इस चीज को मैं फोकस करना चाहूंगा कि एक ही सिस्टम, एक ही फॉर्मेशन, एक ही टैक्टिक्स, एक ही सिस्टम, एक ही काइंड ऑफ बॉल मूविंग जो होता है हमारा डिफेंस से लेके आगे, वो नहीं कर सकते हम हर एक टीम का। आपको कुछ ना कुछ तो काउंटर एक्शन करना होगा। पेप के अगेंस्ट खेल रहे हो अलग होता है, क्योंकि क्लॉप भी जब मुझे एक एग्जांपल में छोटा सा देना चाहूंगा। क्लॉप वर्सेस पेप गार्डियोला मुझे क्यों सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है मेरा, क्योंकि ना क्लॉप अलग-अलग फॉर्मेशन, अलग-अलग स्टाइल ऑफ प्ले दिखाता है पेप के अगेंस्ट, और पेप भी वही दिखाता है। वो मैच देखने में बहुत बड़ा मजा आता है। एक दूसरे की कमियों के ऊपर हम वार करते हैं, और वो मतलब कुछ अच्छा निकलवाने के अच्छे रिजल्ट या फिर डोमिनेट करने की है। जैसे कोशिश। currently you have seen like how साला इज नॉट एग्जैक्टली प्लेइंग एज अ राइट विंगर। वो कह रहा है कि हम्म, उसको कि अब तू थोड़ा वाइड खेल, डार्विन नूनेज को असिस्ट करने में मिलेगा, बिकॉज डार्विन नूनेज का उसने देखा है कि भाई ये वन टच बॉल ये अच्छा लेता है, वन टच ये अच्छा ले लेता है, अगर इसको वाइड डालेंगे तो वी हैव अ 99% ऑफ चांस कि बॉल अंदर जाएगा। तो दैट्स व्हाई ही हैज आस्क्ड सोबोस्लाई एंड मैकअलिस्टर कि तुम दोनों एक डबल पिवट सॉर्ट ऑफ में खेलो, जिसमें सोबोस्लाई तू आगे जा, मैकअलिस्टर थोड़ा सा पीछे रहे, बट तू भी अटैक कर जब तेरा टाइम है तो। So हम्म, that's why you have this sort of great midfield, and हम्म, then you also have Cody Gakpo जो बीच में से भी कभी भी स्पेस निकाल सकता है। वो आपको लगता है कि वो मे बी आपको लगता है कि भाई वो कैम खेल रहा है, बट वो कैम नहीं, वो एक स्ट्राइकर की तरह ही खेल रहा है। वो बहुत ही एक स्मार्ट तरीके से उसने सोचा है एंड ही हैज एक्सपेरिमेंटेड अपॉन, इसलिए उसने मैकअलिस्टर को सिलेक्ट मांगा। डजंट मैटर क्या प्राइस थी, भाई हमारे पास पैसे हैं, वी आर गोइंग फॉर बोथ ऑफ देम एंड ही वेंट फॉर। सो वही डिफरेंस है बिटवीन चेल्सी राइट नाउ एंड वही डिफरेंस है बिटवीन लिवरपूल राइट नाउ कि हाउ दे वेल दे अडैप्ट इन द लीग is what makes them so different. And pretty sure the moment Liverpool is like at the moment they are one of the best teams in Europa League. Obviously, you want such great teams to be playing in the I'd say Champions League, especially with the quality of players that you have. When you have guys like Soboslai, Salah, Luis Diaz, Darwin Nunez. These guys don't deserve to be playing in, I'd say, the, the Europa League. So वही है कि बारसा को भी ऐसे करना पड़ेगा। Like Madrid made a significant adjustment. They are having Jude Bellingham play as a striker. बंदा गोल पे गोल मारा जा रहा है। Jude Bellingham didn't arrive as a striker, I'm pretty sure. Midfield star general होने वाला था। मिडफील्ड था, मिडफील्ड ही था। Now he's shining as a striker. So वो यस। genius innovations आपको सोचने पड़ेंगे. And I'm pretty sure कि Carlo Ancelotti will think something different when it comes to Champions League. Maybe he would go for something else. Okay. And during this stream, I was discussing in the start of the stream. I had told that we will be talking about Man United. We will be taking the comments from the comment section, हाँ, and then we will have leagues and discussions about or topics, or you can say just comments regarding the leagues. And then another one I want to talk about is Indian football. यार इंडियन फुटबॉल ठीक है, मैं किंग्स कप के Yeah. साथ ही शुरू करूंगा। So you want to jump into the
Indian football, the elephant in the room, or you want to slowly take it from the leagues and discussions? I think we I can think, jump into the Indian football because there are yeah. few things. Let's Asia, huh? see. The first one was the Kings Cup. We Yes, played against Iraq in the semi-finals. First half हमने बहुत अच्छा खेला. Second half, like they हमने एक गोल स्कोर किया थ्रू गोलकीपर मेरा. बट वो पता है वो कीपर क्या किया? उसको कोई गाली नहीं दे रहा था. He was smiling. If you saw the match, that dude was smiling like hell. And I thought ये लोग कुछ तो fishy करेंगे. वो बंदे push कर रहे हैं. India literally was lethargic. वो प्रेसिंग इंटेंशन होना चाहिए भाई. ठीक है, समझ में आता है कि यू गेट टायर्ड आफ्टर प्लेइंग 90 मिनट्स. मैं खुद नहीं खेल पाऊंगा, बट पिच पे हो यार, थोड़ा तो दिखाओ कि भाई हमें ये फर्स्ट डुअल जीतने हैं या फर्स्ट बॉल जीतनी है, सेकंड बॉल जीतनी है. वो but नमन भाई, इंटेंशन नहीं था. हाँ. जब जब आप बोल रहे हैं ना कि हाँ. 90 मिनट्स है, आप थका हुआ दिखेगा, भाई तू इंडिया के लिए खेल रहा है. सी, You don't have मैं the इसलिए बोलता हूँ. right to even say, and you are representing India. You are not like playing in the club football, or you are just sitting around and we will have the for football in the evening. No, ऐसा नहीं है ना. हाँ, through professionally एग्जैक्टली. खेलता है, तो सी, he should be having the stamina and the this thing to go forward. So what was the problem was कि yes, India didn't show that enough intent. Iraq showed. They scored through penalties. Penalty kicks में it was very unfortunate that we lost. But the next game against Lebanon was in fact even worse. That was possibly the worst I've seen Indian team play. And Indian team hasn't thought of rebuilding like every other good country has thought. Good footballing nation, I should say. Like what will happen when Sunil Chhetri sir decides to retire? आपने ये सोचा ही नहीं है. no, yes, You haven't thought of it. Like अभी exactly. आप देख लो कल का friendly Argentina played without Messi. They still won 3-0. No matter how much they had to struggle. 3,000 feet above sea level, they struggled, but they still won 3-0. They are winning, which means they are going in the right track. And what are we doing? We are not showing 1% intent. Check this Hmm. out. The Yes. only player in the team that you know is Sunil Chhetri. That is Yeah, going for Asian Games. this is very scary. I'll tell you why. When you have guys like Changte, who is currently a Mumbai City star, understandably Mumbai City won't let him go because you have So these Acer are coming up. the this is Coming the up. team. Hmm. Hmm. I'll just put it up so that we can have a better Yes. idea about what who the players going for Yeah. that Yeah. 17. Sorry. S- I'll just okay. This is the one. Yeah. Yeah. Gurmeet Singh. I'm pretty sure nobody. I think the only player apart from Dheeraj, the only Dheeraj, Gurkirat Singh I've Rahim heard. Ali, Rahim Rahim Ali. Ali, Dheeraj Singh, Rahul Yes. KP, Ayush Dev Chetri, because I think he plays for Kerala Blasters, if I'm not wrong. Bryce Miranda, I think I have heard he was I have in also heard. FC Goa. But you're talking about like Vinci एक Berato होता है was ना, one for of example, like Spain Olympics में जा रहे हैं. Now if it's for example after football season, for example like कुछ young या established, so you need that young and established players. Now if you only have certain players, you're banking up on a 38-year-old man. He's 38 for God's sake. he's It's like he's 30. it's 38. Sunil Chhetri. I thought he was more. That is why I was saying. Bhai, He's so 39, that's what Baba. happens. He's So 39. he's He's 39. become that. Now he's 39. So now you're concerned. Like 39 years of age, a guy is there. You are banking upon him to go in Hangzhou to play against possibly the best Asian sides.
आई डोंट नो ये कौन सी स्क्वाड प्लानिंग है. एंड टू बी फेयर, it would have been better to not even send Sunil Chetri if you are planning to send these guys. Because They if were you are not actually sending, not planning to. They were actually not planning to send Sunil Chhetri also. because see, when you have like uh, these guys and you are sending Sunil Chetri just for the name, do you really think a 39-year-old man would have that same energy or same things that these other guys would have? No, you have to accept it. Like Lionel Messi didn't start yesterday's Bolivia game because he said Yes, he's getting slower. And in a year or two, Ronaldo will also be like कि भाई मैं start नहीं कर पाऊंगा, मैं बैठ जाता हूँ. Do you think it would be fair on them to expect कि भाई तू जा हमें कुछ medal वेडल जिता? No, I would be stupid ass man. So people need to be very like अगर आप सुनील छेत्री अगर आप बड़े प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे, you're not sending Jignel, not sending Gopichin Sandhu, not sending Chante, you're not sending any other established Indian player. Thapa, Thapa. Apuya, all these players. You're not sending them, तो what's the use of sending सुनील छेत्री? आप इससे अच्छा कोई और किसी और को कैप्टन बनाओ, आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर लो. Yeah, It's much better. and So I think it is also the reason from ISL. आईएसएल बोल रहा क्लब्स बोल रहा था हम लोग नहीं भेजेंगे अपने प्लेयर्स एशिया कप के लिए see एशियन गेम्स के लिए the कौन सा like क्लब बोल रहेगा ऐसा अगर आप आउटसाइड मुंबई सिटी के क्लब हो तो अंडरस्टैंडेबल है कि भाई आपका एसीएल आ रहा है, which is also important. यस तो ठीक है, दैट इज there देयर is a that is a bit of a dilemma. वो क्लब के ऊपर वो क्या करना है, बट अगर आप बड़े नेम्स को नहीं भेजे, आई डोंट सी जिगनल, आई डोंट सी संधू, तो छेत्री को क्यों भेजो? ही इज 39, ही इज नॉट इवन 29 कि आप उससे एक्सपेक्ट करो. थोड़ा तो यार समझना चाहिए. Expecting from a 39-year-old man is, I don't know in what sense you would expect. What he has done for the country, I back him. What he has done, he has made Indian football, I'd say, popular. He is in the top three goal scoring among worldwide. एक्टिव He's गोल स्कोरर्स active goal scorers among Messi and Ronaldo, which is a big achievement. So आपको एक पॉइंट पे रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर आप टेस्टिंग स्क्वाड भेज रहे हो एशिया कप में, तो आप छेत्री को नहीं भेजो, because Simon Grayson is going to bench him for some games because he even knows कि भाई ये इसकी एज हो रही है and we need to plan for the day ahead, in my opinion. यस So I don't understand. And I don't know if you guys heard it. There was this news which came out that Indian teams consulted an astrologer and they paid him for his services much before he was there, 12-15 lakhs, which was way before the Asian Cup. But since he lost in the Asian Cup, so वो news भी आ पड़ी. ये है ना Yes, controversy yeah. they did not actually create this sorry Yes. Igor Stimac I think himself said that he did not do it You would do it because, see, it's Indians who believe in astrology and they have good reasons because they tell you things. But for example, if tomorrow, let's imagine some foreign guy becomes a coach, you tell him कि this guy, he's an astrologer, he tells you things and his accuracy is इतनी, वो तो जाएगा ही भाई थोड़ा, because थोड़ा सा तो आपका ध्यान उधर जाएगा ही. Let's be frank. तो आपको थोड़ा सेंसिबल यहाँ पे अप्रोच रखनी पड़ती है जब आप देखते हो कि yes हारने के बाद आप ईगो स्टिमाच को ब्लेम कर रहे हो. द गाय हु बेसिकली गॉट रेड कार्ड इन द एसएएफ चैंपियनशिप, वो आपके लिए रेड कार्ड ले सकता है, आप उसी को ब्लेम करने को तैयार हो. मतलब सक्सेस हुआ तो पूरे बोर्ड को चाहिए, बकरा बनाना है तो कोच को बकरा बना दो. ये नहीं होता है. एंड अगर ऐसा चलता रहा, कोई कोच नहीं बनना चाहेंगे. लाइक एट वन पॉइंट पीपल वांट टेस्ट बकिंगम टू बिकम इंडियाज कोच. वो ये सब देखेगा, बोलेगा भाई मैं मुंबई में खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं सिटी ग्रुप में खुश हूँ, यहाँ एटलीस्ट मुझे बैकिंग मिलेगी, मैं गालियाँ खाने को तैयार हूँ. बट सक्सेस में भी मुझे ये लोग प्रेस कर रहे हैं, डिफीट में भी मेरे को बकरा बना ये करने को तैयार है, ठीक है. बट ये नहीं कि सक्सेस में मेरे को आगे नहीं कर दिया और
डिफीट में, लाइक डिफीट में एकदम आगे कर दिया कि हाँ भाई ये कातिल है, ये है कल्प्रिट, वो है। एंड व्हेन True. इट्स अबाउट मेन सक्सेस, आप उस कोच को पीछे कर रहे हो, बाकी सब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कल्चर। I also don't understand all these things. द्वारका भाई, आपको कुछ ऐड करना है रिगार्डिंग द प्लेयर्स दैट आर गोइंग, और सुनील छेत्री जी के बारे में, या फिर आई थिंक सीमैक ऑल्सो वोंट बी गोइंग फॉर द एशियन गेम्स, इफ आई एम राइट, वो तो मैंने since सुना it is नहीं। the B team, since it is the आई B team. थिंक आई थिंक देन उसका असिस्टेंट्स एंड ऑल कोई जाएगा, या हू नोस। तो द्वारका भाई, आपका क्या राय है? म्यूट 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 म्यूट। आईएसएल क्लब्स की भड़वेगिरी चल रहा है भाई, दूसरा कुछ नहीं है। रिलीज नहीं कर रहे दैट इज, प्लेयर्स। और एंड सुनील छेत्री विल बिकॉज बी ऑफ लीडिंग दैट, दैट फुटबॉल साइड, लाइक ये टीम है ना, क्योंकि जितने भी प्लेयर सिलेक्ट हुए थे उनको रिलीज करने में आईएसएल क्लब्स के बेंचो इतना क्या मतलब, तुमको तो तुम लोग बेंचो यूसीएल जीत जाओगे क्या? उनको प्लेयर्स को खुद रखो, पर अपनी, पता नहीं क्या चीज। और प्लेयर्स भी कैसे एग्री कर रहे हैं, प्लेयर्स भी यार, मुझे एक बात नहीं पता चल रही है क्या, क्या बोल सकते हैं यार, क्या बोल सकते हैं इतना मतलब, लाइक दे जस्ट वांट टू जनरेट मनी, नथिंग एल्स, इतना ही करना है। अभी मैं स्क्वाड देख रहा हूँ, गुरमीत सिंह, धीरज सिंह है, सुमित राठी, नरेंद्र गहलोत, अमरजीत सिंह है, कियाम, राहुल केपी, ओके, रहीम अली इज देयर, अफजल नूरानी इज देयर, सुनील छेत्री, रोहित दानू, अरे छोटे छोटे बच्चे, मतलब अनिकेत जाधव, भाई साहब क्या बोलूं यार। बट गुड फॉर सम पीपल लाइक कियाम, आयुष देव, और नूरानी वगैरह, ब्राइस मिरांडा, रोहित दानू, गुरकीरत सिंह, अनिकेत जाधव स्पेशली, वेल्स फ्रॉम महाराष्ट्र, नरेंद्र गहलोत डिजर्व करते हैं बिल्कुल भी खेलने के लिए इंडिया से। बट अगर आपको उस कंपटीशन में अगर आपको अच्छा करना है, या फिर इफ यू वांट अ गुड रन इन दैट कैंपेन, तो आपको थोड़ा सा अच्छा स्क्वाड भी भेजना होगा यार, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स और विथ बेटर प्लेयर्स वहां पे आ रहे होंगे, एंड देन यू आर जस्ट सेंडिंग अस द टीम लाइक मेसी विथ बार्सिलोना बी टीम, सेम काइंड की सुनील छेत्री विथ दिस प्लेयर्स, दिस टीम, यही बोलना चाहूंगा, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि देखो, अब बाकी तो अच्छा तो रन हो रहा है, धीरे धीरे हम चल रहे हैं, थोड़ा सा हमको मेंटालिटी में भी चेंज करना जरूरी है, क्योंकि प्लेयर्स जो थे पिछला मैच जो लेबनान के अगेंस्ट हम खेल रहे थे, इतनी चूतिया टीम्स के अगेंस्ट अगर हम ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आपको कैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ क्लब फुटबॉल नहीं बढ़ाना है ना हमको इंडिया में, हमारे भी कंट्री जो है थोड़ा सा रिप्रेजेंट करे ग्लोबल लेवल पे, थोड़ा सा कुछ नाम रहे। जब वनली सुनील छेत्री जो एक्टिव गोल स्कोरर, वनली बिहाइंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी, ये बात हमको सेलिब्रेट नहीं करनी, हमको दूसरी भी चीजें बहुत सेलिब्रेट करनी है ना, वो चीजें हैं यार। तो मुझे यही लगता है कि थोड़ा सा आईएसएल के लोगों को, जितने भी फुटबॉलिंग एआईएफएफ की बॉडी में है, ये सारों को मिलके एक निकालना चाहिए कुछ आंसर, ताकि आपकी एंड नेशनल साइड भी अच्छा। इसके पहले एमस्टर ने वो आर्टिकल निकाला था कि हीरो पुल्स आउट एज द टाइटल स्पॉन्सर, स्पॉन्सरशिप से हटा दिया। इट्स लाइक क्वाइट शॉकिंग कि लाइक लीग अभी शुरू हुआ नहीं, there's just some weeks left एंड ये कांड हो रहा है। भाई कुछ तो वर्किंग्स में लोग चल रहा है, बिकॉज जैसे मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण देना चाहूँगा। आइसलैंड के प्लेयर्स बिफोर 2016 बहुत कम लोग को पता था, या लेट अलोन द प्लेयर्स, टीम नहीं पता थी। दीज गाइस शॉट इनटू द क्वार्टर फाइनल्स, अच्छा खेले। डेनमार्क के प्लेयर्स लोगों को पता थे, क्रिश्चियनसन थे, एरिक्सन थे, श्माइकल था, हॉयबर्ग था। लेकिन जो 2021 की यूरो रन थी, क्या शॉट किया उन्होंने, मतलब लाइक देख के मजा आता था। एंड एक और चीज होती है, जैसे लोग कहते हैं पॉपुलेशन इज अ नेशन स्ट्रेंथ,
वो अलग बात है कि भाई वो जितने भी 1-2 मिलियन लोग रहते हैं उसमें 11 लोग सेलेक्ट होते हैं, बट in a country which has like the potential to be the powerhouse in all aspects, अगर आप स्पोर्टिंग पावर्स नहीं बनते हो, दैट्स वन ऑफ कंट्रीज बिगेस्ट, एंड एक ही स्पोर्ट में एक्सेल करते हो ये वो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया को आप देखो, ओलंपिक्स में वो कहाँ रहती है, टॉप 5 में हमेशा रहती है, समटाइम्स दे आर इवन इन टॉप 3, स्विमिंग में वो चैंपियंस है, दे प्ले डिसेंट वेल इनफ इन फुटबॉल, क्रिकेट में वो हैंडीवेस चैंपियंस है, रग्बी दे आर चैंपियंस, हॉकी दे आर चैंपियंस, ऑल स्पोर्ट्स में वो चैंपियंस हैं। आपको ऑल स्पोर्ट मेंटालिटी चाहिए, एंड दिस अप्लाइज टू एवरी इंडियन स्पोर्ट, लाइक इंडिया इज डूइंग वेल इनफ इन बैडमिंटन, आर्चरी में भी अच्छा कर रहा है, एंड दे नीड टू डू वेल इनफ इन फुटबॉल एज वेल। अगर एंड कभी कभी आप सिर्फ प्लेयर्स एंड कोचेस पे कह सकते हैं, बट समटाइम्स जो ग्रास रूट पे आप फुटबॉल खेलते हो ना, वो भी बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे इफ यू गो इन ब्राजील, वो अलग तरीके से खेलते हैं, दे स्टार्ट प्लेइंग इन दो स्मॉल पार्किंग लॉट्स एंड ऑल। उससे क्या होता है, जब आप कंक्रीट पे खेलते हो आपका बॉल आप कंट्रोल कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे गिरना नहीं है नीचे, मैं नीचे गिरा तो मेरे पैर पे चोट लगेगी, एंड मैं गया। आप वो चीज़ें भी थोड़ा सीखनी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा मेंटालिटी में भी चेंजेस आएगा। इंडिया में आई हार्डली थिंक पीपल प्ले ऑन दिस व्हाट डू यू कॉल नहीं, basketball नहीं. rings and all. When you come to down south, हाँ, in Kerala साउथ and में इट्स all, डिफरेंट, आई एग्री। it's साउथ में थोड़ा it- डिफरेंट है, इन मुंबई it's बांद्रा में थोड़ा डिफरेंट है, इवन इन नवी मुंबई या एरियाज लाइक वाशी डिफरेंट है, बट इफ यू लुक एट जनरल ओवर इंडिया, लीव southern states, leave somewhat the northern eastern and the west bengal, overall india sucks. absolutely. एंड जैसे हम लोग No, कहते हैं कि टर्फ पे भाई जाओ खेलो नेचुरल ग्रास, बट टर्फ डजंट टीच यू वन थिंग। जब टर्फ पे आपका टैकल होता है, आप गिरते हो नीचे, आप थोड़ा सा उठते हो, आपको थोड़ा ठीक लगता है बिकॉज ग्रास रिड्यूसेस दैट इम्पैक्ट, बट इफ यू प्ले मट्टी वाले ग्राउंड पे, जो एक्चुअल फुटबॉल जो इंडिया में ग्राउंड पे खेलते हैं, व्हेन यू फॉल देयर, जब आप टैकल देते हो, टैकल पहली बात तो कोई देता है नहीं, बट आप टैकल देते हो क्योंकि आपको लगता है टर्फ पे बहुत वो है, आपको भी दर्द होता है, जो सामने वाले को लगता है उसको भी दर्द होता है। So Indians, like my experience, I found myself harder to play on the football grounds rather than on turf, because on turf मैं बहुत चीज़ें कर सकता हूँ आराम से, मैं हेनरी जैसा गोल्स मारूँ टर्फ पे, आई हैव बीन फिनिशिंग लाइक I'd say sometimes like Werner also, but on a ground is where your actual ability gets tested. And जो current generation जितना tough and all कर रहा है, if you don't play on a natural ground, I'm sorry आप नहीं टिक पाओगे, compare it with any team, sorry. and so I want to add on that कि आप कंक्रीट में अपने आप को बैलेंस कर सकता है एंड व्हाट वी डू इन मैं जब खेल रहा था आई ऑल्सो डू विथ माई फ्रेंड्स. I obviously play tennis. I love to play tennis, but with group games में तो हम लोग फुटबॉल ही खेलता है. And we used to my college used to be near the beach, so we used to go on the beach and used to play. There, your stamina increases because when you run in a beach, भाई हमारा इतना स्टैमिना जाता है ना, विद इन 10 minutes you will be able to get the uh, tiredness of 40-45 minutes, because running on a beach is very the sand में जो डिले होता है ना हमारा पेस में, that really messes your mind, but it actually increases your stamina. So what I would prefer is to learn your cautiousness in the concrete and learn your stamina in the sand. वही कह रहा हूँ, तो somewhere grassroots also needs to be changed if you want, like Yes. for example जैसे quite some years ago चाइनीज सुपर लीग बहुत डिमांड में था, क्योंकि भाई दे थॉट कि
प्लेयर्स को पैसे से खरीद लेते सब आएंगे, आ तो गए, लेकिन आपने लोकल टैलेंट को तो प्रमोशन किया नहीं। क्या हुआ? चाइनीज सुपर लीग भी बंद हो गया ऑलमोस्ट, आपके टैलेंट चले नहीं, एंड प्लस सब आपका खत्म हो गया। एंड सऊदी के साथ भी यही हो सकता है अगर उन्होंने लोकल टैलेंट किया। द्वारका यूर ऑन म्यूट, आप म्यूट पे You हुई। remember Oscar wala deal? यस। Oh, yeah. I still regret and I still feel so bad about Oscar going because loved that player during that 2014 World Cup. जब नेमार, ऑस्कर, all these players were playing for the front line of Brazil, भाई साहब क्या खेल रहे थे ये लोग. But he went to China. दिमाग ओके, खराब. थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट जाऊंगा, बट Fabio Grosso is the new Olympique Lyon head coach. So people who don't know who was Fabio Grosso, ask Italy fans in the 2006 World Cup semi-final. He was the one who broke the deadlock in the semi-final. Oh उसने पहला wow. गोल मारा था। Grande Grosso was the champ from the Italian commentator. Okay, Okay. Ferran Torres this season, yes, he's doing good. बस Yes. consistently करना पड़ेगा। हाँ, exactly. And yes, already द्वारका भाई का इसके ऊपर मुझे पता है. Ferran Torres is what is rise about Ferran Torres is, and also Pedri Football. is expected to come back on October 21st. You know what's bad at FC Barcelona right now? क्या हुआ? When Ronald Koeman came, he saw Pedri as a great prospect, no doubt. But do you know what he did very bad with him? उसको ओवरप्ले करवा दिया। आप इतना ओवरप्ले करवा दिया कि पेडरी 3 साल में 100 गेम खेल चुका है फॉर एफसी बार्सिलोना। अब Unreal, unreal. विच इज एंड सेम हैपेंड विद गैरी। तो कहीं ना कहीं आपके साइड से भी गलती होती है जब इंजरी होती है, बिकॉज प्लेइंग 100 गेम्स इन 3 years इज लाइक, भाई ही इज ऑलमोस्ट अ वेटरन। 100 गेम्स बहुत मायने रखता है भाई। जब आप कहते हो कितने बंदे ने 100 गेम्स खेले, इट्स लाइक भाई तुम लोग इतना क्या मतलब साबुन के टुकड़े की तरह खींच रहे हो क्या? सो कि लास्ट उसका वो छोटा सा टुकड़ा बचेगा तब जाके उसको आप नए वाले साबुन पे चिपकाओगे। सो यार देखो, आप क्लब डॉक्टर्स को ब्लेम कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। आई एम प्रिटी श्योर कि पेड्री खेलेगा तो, लेकिन अगर आप ये सोचो कि भाई वो हर सीजन, अब भाई आप सोचो कि एक सीजन में ला लीगा में 38 गेम्स होते हैं। 38 गेम्स आर इन ला लीगा, आपके अराउंड 6 गेम्स आर इन यूसीएल, दैट्स 44 गेम्स। आप कोपा डेल रे का सोच लो, और सो दैट वुड बी समवेयर अराउंड, लेट्स इमेजिन इट्स 55 गेम्स टिल यूसीएल ग्रुप स्टेजेस। एंड अगर आप यूसीएल में और आगे जाते हो, you play somewhere around, let's say 6 के बाद you play somewhere around, let's say 12, which excludes the final। आप एक सीजन में 70-80 गेम खेल लो, 70-80 गेम एक सीजन में, एंड यू एक्सपेक्ट कि भाई पेडरी हर गेम में स्टार्ट करे? पॉसिबल। कभी कभी मेरे को मन करता है कि मैं पेडरी का भी बोलूँ, भाई तुम दोनों घर पे रहो, आज मत आओ, मस्त चिल करो, क्योंकि भाई बहुत खेल लिया है तुमने। मेरे को डर लगता है, एंड यही डर मुझे यमाल के साथ भी है। हिज मदर इज एंग्री कि वो नहीं खेल रहा इतना, बट उसकी मम्मी को समझना पड़ेगा कि आपका लड़का 16 साल का है। 16 साल का लड़का जो बड़े बड़े डिफेंडर्स के अगेंस्ट खेल रहा है, डाल लीगा। एक गलत इंजरी बहुत कॉस्टली हो सकती है। आपके पास राइट विंग पे रफीना पड़ा है, एक्सपीरियंसड है थोड़ा, आप उसको खिलाओ। यमाल को आप एक दो गेम नहीं भी खिलाओगे, इसको बारसा भी में भेज दोगे तो भी चलेगा। देयर इज नो I'd say rush about that, but गेम मैनेजमेंट अभी बार्सा को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, विच समथिंग मैं खुला बोल रहा हूँ, मैड्रिड डज मच बेटर समटाइम्स। मैड्रिड गेम वर्कलोड ऑफ प्लेयर्स बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, दैट्स व्हाई यू हैव मैड्रिड प्लेयर्स बीइंग मोर फिट देन बार्सा। ये मैं खुले एक्सेप्ट करता हूँ।
Yeah. Okay, regarding Bernardo Silva and Daniel Olmo have या Barca. ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ. Yeah, चुप रहे. मेरे को ये सही. But this I also heard. Oh, PSG अगर तुझे like if you have the guts to get these players लेके जा. मेरे को कोई फर्क नहीं है. No, not because they are going to be not because that they are crucial players for us. hmm. But if they think that they will get a better project than Real Madrid, ja, सॉरी ja. भाई सॉरी. I'm तुम्हें भी डेम्बेले की संगत चाहिए जाओ, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं. जाओ बट हम एक बात बता दूं, yeah PSG can bring Pep Guardiola, but still they won't win a Champions League. You know why? Because वो क्लब के टॉप हायरार्की में जो बैठते हैं, those board of directors, they don't know anything about football. They had a guy called Leonardo जो उनके लिए खेलता था. He was a former player of PSG. Leonardo था ना उसका नाम. He was with Nasser Al Khilafi when I think so yeah लियोनार्डो बहुत उसका नाम सुनते थे. क्या उखाड़ लिया भाई, घंटा कुछ उखाड़ पाया वो. Because when you have a guy like Nasser Al Khilafi who only thinks football in money terms, तो घंटा कुछ नहीं होने वाला. जब तक आपके पास एक सेंसिबल ओनर नहीं आता. लाइक यू लुक एट ब्राइटन. डू यू रियली थिंक ब्राइटन इतना वो था? राइट नाउ उनका ओनर जो है या जो भी क्लब प्रेसिडेंट है वो इतना स्मार्टली डील करता है प्लेयर्स के साथ कि it's so refreshing to see कि that man just understands football, he understands players, and he understands the business. But first of all, he sees the players as players, and he doesn't see them as money objects or business objects. Something which PSG lacks. Like for example, I'm pretty sure कि अगर मेसी का कॉन्ट्रैक्ट उसको लापोर्ता ने पहले बोल दिया था कि भाई हम तेरा रिन्यू नहीं कर पाएंगे, सिचुएशन ऐसी है. Not in a million chances he would have gone to PSG. He would have preferred to go to Man City and वहाँ से रोनाल्डो के साथ राइवल भी करता. It would have made a Premier League lot more interesting. And जितने भी Madrid fans, Barca fans देख रहे हैं भाई, please don't make the mistake कि आप अपने प्लेस को PSG भेजो. कामाविंगा भाई तू सेरिया चले जा चलेगा, यूवेंटस चला जा, इंटर चले जा, एसी चले जा, बट PSG गलती से भी मत जा. एंड अगर तुझे फ्रेंच लीग में जाना भी है, जो तुम्हारे PSG छोड़ के कोई भी क्लब चला जाए, यू नो इन फ्रांस दे सीक्रेटली हेट PSG not because of some like they have the most wealthiest one, but it's a historical thing. There's a resentment towards Paris because of their history, and now also when you had a asshole like Khilafi or hatred, what is that thing? The much better club for you in France, in my eyes, to buy Marseille चले जाओ. Marseille Marseille, you when you have guys like Ribéry and Zidane coming from there, you know it's a great club. Zidane को भी ऑफर किया था कि भाई तू कोच का PSG, उसने कह दिया भाई मैं मार्सेille का हूँ, मैं PSG कभी कोच नहीं करूँगा. पेरिस तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा. He stayed loyal to his city. तू मुझे कितना भी पैसा दे दो, तुम मेरे सामने कितना भी गिर रहा नहीं तो नहीं. तो भाई कामाविंगा कहीं नहीं जाएगा मैड्रिड फैंस, ना वैल्वर्डे जाएगा, दोनों अपने क्लब से प्यार करते हैं. एंड PSG, if you really think you can sustain guys like Gonzalo Ramos, तुम बड़ी गलती कर रहे हो. Just wait for one more season. उसका अगर अच्छा सीजन हुआ, he is pretty gonna leave you. one season half season हाफ सीजन छोड़ मुझे छोड़ देगा. गोंजालो रामोस में भी अगर वो मैड्रिड आया तो और अच्छा फॉर हिम, सिंस मे बी ही वुड सूट देयर. बट कहीं भी जा, गेट आउट ऑफ दैट शिट होल. तू मेरे भाई तू सेरिया चला जा, एसी मिलान में खेल ले. मिलान we डेफिनेटली don't mind you playing in any team. एक्सेप्ट फॉर We पीएसजी. only think that project wise, if you go to any team, we don't mind, except for एग्जैक्टली. PSG. क्योंकि बिकॉज इतना खराब है. वो है, बिकॉज सी व्हेन यू से कि भाई कामाविंगा केम फ्रॉम रेनेस, राइट? Let me just cross check.
Yes, I think yes. रेनिस से इट्स वन ऑफ द लाइक जो ब्रिटनी एरिया है फ्रांस का वो वहाँ से आता है विच इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू रेस्ट ऑफ फ्रांस. सो अगर भाई हाँ nice. तेरे को जाना ही है फ्रांस में तो पहली बात तो जा मत. बट अगर सच्ची में जाना है लुक एट क्लब्स लाइक मार्से, लियोन, रेनिस, ये सब क्लब्स देखिए. बट in my eyes, I'm pretty sure next season, I think Raul and Javi Alonso में Madrid board are having a discussion किसको लेना for their coach. I think it will be Raul for me if I am going because I wanted Zabi Alonso to come in because how he does with Bayern Leverkusen, and if he is able to take them to UCL, plus if he is able to bring them to top two, if he is able to do both of them in just 2 seasons with Bayern Leverkusen, ready to take that man. But the difference is 2025 तक उसका managerial contract है, if I am not wrong. So I don't know whether Leverkusen will be ready to leave the coach, because if they are brought from that 9 and 10 position to top 6 or top 2 position, currently I think they are in number 1 position. 4 मैचेस खेला है उन लोगों ने आई थिंक, एंड दे आर currently sitting top of the Bundesliga, just behind Bayern Munich. Bayern Munich is number 2. So I don't know how effective it will be to, or how easily we could bring coaches from Bayern Leverkusen. Because if I remember, Dwarka Bhai bhi बोल रहा था matches managers are made in Bundesliga, right, Dwarka Bhai? And players are made in La Liga. म्यूट पे है. जर्मन लीग से प्लेयर्स नहीं निकल के आते, बट कोचेस निकल के आते हैं, जबकि पूरी दुनिया से प्लेयर्स निकल के आते हैं. मोस्टली स्पेनिश लीग से प्लेयर्स निकलते हैं, मैनेजर्स भी निकलते हैं, बट जर्मन लीग से सिर्फ कोचेस निकलते हैं. ये Yes. So I would see uh, this Raul, because he has been doing consistently with our Castilla second division, second team. So I would better see Raul in the head coach position. Let's give a chance, because he has been staying in that in the Real Madrid for. And one more thing, he wants it. If he wants it also, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जब रॉडी वॉलर को जब जर्मन टीम को दिया था, उसने बोला मैं इंटरिम कोच ही सही है, तुम लोग हेड कोच देख लो, परमानेंट कोच देख लो, आई एम नॉट रेडी फॉर डूइंग द लॉन्ग टर्म वन, आई एम ready to do the interim one. So I don't know whether Raul wants to be in the head coach. There are chances because he was linked with going to Villarreal to join them as their head coach, but they signed somebody else, if I remember correctly. So he is back in Castilla. And next year, if obviously Don Carlo is leaving to Barcelona, sorry, Brazil, he is going to take up Brazil from 2024 onwards. So let's see who will come in as coach. That is a big question mark in our team itself. Who will be our next coach? It was a revolution when Zidane came in. Zidane, I was personally like, okay, he came in, got some good games out of the team, and went off. That's it, done and dusted. Then again, Carlos came in. So we cannot think about Zidane coming back. Zidane won't be coming back. We should be looking for a new manager. It could be Nagelsmann, or it could be Zabi, or it could be Raul. So yeah, that is my thoughts. द्वारका आपको कुछ ऐड करना है?
म्यूट 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 म्यूट। मैं म्यूट क्यों करता हूँ बार बार? भाई मुझे मैड्रिड के बारे में एक बात बोलूँ क्या? क्या? मैड्रिड के बारे में बोल, बोलना बोलना, मस्त बोल। राहुल गोंजालेस का मुझे नहीं पता, बट जावी या अलोंसो ज़्यादा मुझे ये लगता है फिलहाल इज रेडी टू टेक ओवर एज अ मैड्रिड का कोच वाला जॉब। वो ज़्यादा मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है क्योंकि वो आपको देखो राहुल गोंजालेस ने किया है वो भी चलो ठीक है, क्लब लेजेंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा जावी अलोंसो में ज़्यादा कैरेक्टर लगता है मेरे को। जी। आई ऑल्सो सी। आपको आपको या मैड्रिड में बड़े प्लेयर्स आएंगे क्योंकि मैड्रिड में कैसा कि एकेडमी के प्लेयर्स को प्रमोट बहुत मतलब करते ही नहीं लगे, और वहां पे बाहर से प्लेयर लाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि ईगो इश्यूज बहुत आते हैं, जो कि मैड्रिड में हमेशा से होता आ रहा है। या एंड हाँ, एंड द अदर थिंग इज जब एकेडमी के थ्रू प्लेयर्स नहीं आ रहे तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, उसके लिए टाइम लगता है, एंड देन उसमें थोड़ा सा क्लैशेस होते हैं, ईगो क्लैशेस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। सो एट दैट टाइम आपको वो प्लेयर्स का जो इश्यूज है वो संभालने के लिए मुझे लगता है कि जाबी अलोंसो वाला प्लेयर सही है, क्योंकि जाबी अलोंसो इज द बॉस। इट ट्रू। इज भाई, देखो मैं यहाँ का बॉस हूँ, तुमको जो गांड मरवानी मरवाओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं जो बोलूंगा वही होगा, बात खत्म। ये वाला मुझे स्टक हो रहा है। हेलो। ओके। यस भाई, पता नहीं इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पे। हाँ, no, हाँ, no, तो नहीं, but हाँ, regarding these were my thoughts on or topics to be discussed ओके ओके। for today's stream. Regarding Manchester United, तो पहला बात, and then talking about some amount of league directions and about our Indian football. And I am looking forward for more Indian football topics to be added on in our streams, Definitely, so I'm that sure we we'll can. cover Asian games also. We'll cover Asian games Yes, also. Whenever we yes, are streaming on my channel, your channel, wherever we are streaming, but we'll exactly. definitely cover that also. Yes, yes, yes. It And I needs think our in recognition, this, our support, and we should do it. yes, our team needs support. So I Yes. am ready to give them the support. And also, I would say that we सैटरडे को आप फ्री हो, अभी से ही बोल देता हूँ, कौन सा लाइक मैच है? हाँ, मैच के लिए, क्योंकि लिवरपूल का एक मैच है और मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी मैच है। लिवरपूल का किसके अगेंस्ट है? वुल्फरहैम्पटन वुल्फ्स। और दूसरा किसका है? मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन मैं कर लेता हूँ, लिवरपूल वाला तू कर ले, या फिर मैनचेस्टर वाला तू कर ले, लिवरपूल वाला मैं कर लूंगा। हाँ, वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कौन फ्री है, क्योंकि No, no, इट्स I am free. I am free. I am free. it is at 5 p.m. Oh, So no other. issue. Still. Huh. Okay, okay, okay. Okay. So, guys, in the last ending of the stream, I would add this also. Let me just add in the banner so that whoever is watching in the future. Um, um, Still. Okay. क्या कर रहा है? Wait a minute. अच्छा, कुछ शो कर रहा है क्या? Presenting So, something? I am putting it in the banner itself, stating that on September 16th, watch along of Manchester United match and Liverpool match. Hmm. We are adding this tag so that whoever is wanting to, whoever is free on that day, and whoever watches this stream again will surely see that there is a tag
and we will put the updates in our stories in our Instagram, stating when we will be who will be doing the stream of Manchester United and who will be doing the stream of Liverpool. No issue. So thank you guys for joining us. Whoever was there with us and whoever is going to see the stream, like, share, and subscribe to all our channels. To Naman, who left early, thank you for joining my stream, and please subscribe to his also, Indian Yes, Coolers, cooler. and subscribe to Apna Marathi Cooler, and also subscribe to this poor Amster Dragneel. So thank you guys and have a nice day. Jai Hind. यस विस्काइल बारसा विस्काइल इंडिया एंड डेफिनेटली वो वीकेंड का तो प्लान हमने बता दिया बट विल बी कवरिंग एशियन गेम्स आल्सो आंसर है ना जैसा Yes, we पॉसिबल हो will जाएगा be. We यस will be. According to when it is being played, we will be covering the Indian Asian Games. यस Okay. यस Thank you guys. Bye. यस अंटिल देन गुड बाय विस्काइल बारसा जय हिंद जय महाराष्ट्र मिलते हैं नेक्स्ट टीम पे Next time.